हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो वी हैव अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हियर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर स्टेप बाय स्टेप and we will be using traditional approach of capital structure for the same. So question is, a company's current operating income is rupees 5 lakh. That means EBIT आपको यहाँ पर given है 5 लाख रुपए. The firm has 15 lakh rupees debentures of 10%. मतलब कि आपके पास 15 लाख रुपए के debentures हैं जिस पर rate of interest payable है at 10%. Cost of equity capital is estimated to be 12%. You are required to calculate current value of the firm using traditional approach of capital structure, overall capitalization rate, value of the firm and overall capitalization rate if debt is increased by 5 lakh rupees. So अभी आपके पास debt है 15 लाख का, अगर 5 लाख रुपए से उसे बढ़ा दिया जाता है, that means total debt कर दिया जाता है 20 लाख रुपए, तो फर्म की वैल्यू एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा। एंड इस सिनेरियो में अगर आप डेट को बढ़ाते हैं, आपका कॉस्ट ऑफ डेट आपका हो जाएगा 12%, पहले 10 था अभी वो 12 हो जाएगा इफ डेट इज इंक्रीज्ड, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विल आल्सो बी नाउ 15%. सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट value of the firm and overall capitalization rate under both the circumstances. So let's start with the solution. So first of all कैलकुलेट करते हैं करंट वैल्यू ऑफ द फर्म. EBIT हमें गिवन है 5 लाख रुपए. सो सबसे पहले आपको EBIT में से लेस करना होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. 15 लाख के डिबेंचर्स आपके पास हैं, इंटरेस्ट रेट है 10%. सो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो जाता है 1,50,000 रुपीज, जिसे आपको माइनस करना होगा फ्रॉम 5 लाख रुपीज. सो आई हैव केप्ट इट इन दी ब्रैकेट्स. नाउ व्हेन यू सबट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन डेट from EBIT, you get net income that is available for equity shareholders, और आपको क्वेश्चन में cost of equity capital भी given है, जिसे यूज करते हुए you can calculate market value of equity. So market value of equity is 3,50,000 dividing it by 12%. You get market value of equity as 29,16,667 rupees. So when we add market value of debt, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है as 15 लाख रुपीज, to the market value of equity, we can get total market value of the firm which is 44,16,667. Next we have to calculate overall capitalization rate. Formula for that is EBIT, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, dividing it by value of the firm जो हमने अभी कैलकुलेट किया है into 100. So EBIT is 5 lakh rupees. Value of the firm is 44,16,667 into 100. We get overall capitalization rate as 11.32%. Next, we have to calculate value of the firm if additional debt is taken worth rupees 5 lakh, क्योंकि हमें क्वेश्चन में given है if debt is increased by 5 lakh, so what will be the value of the firm as well as overall capitalization rate. So already firm के पास 15 लाख का debt है, अगर हम उस पे 5 लाख और जोड़ देते हैं, that means now total debt is 20 lakh rupees. Same table, same format हमें use करना है, but only difference here is now your debt is 20 lakh and interest on debt is at the rate of 12%, और आपका cost of equity भी अब हो चुका है 15%. सो EBIT अभी भी हमारा सेम है, दैट इज 5 लाख रुपीज. अब हमारा इंटरेस्ट ऑन डेट हो जाता है 20 लाख इंटू 12%, दैट इज 2,40,000 रुपीज. नाउ द नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 2,60,000 रुपीज, बिकॉज हमने 5 लाख में से लेस कर दिया है 2,40,000 रुपए. नाउ 2,60,000 rupees is what is left for equity shareholders. Cost of equity capital is now 15%. So calculating market value of equity, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 2,60,000 rupees dividing it by 15%, क्योंकि अभी हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग है, राइट. सो अभी हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाता है 17,33,333. Adding market value of debt to the same, that is 20 lakh rupees. Now total value of the firm is 37,33,333 rupees. And using the same formula that we used earlier, we can also calculate overall capitalization rate when your debt is 20 lakh rupees. So अभी भी EBIT 5 लाख ही है हमारे पास, but now the value of the firm is 37,33,333.
So now overall capitalization rate is 13.39%. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. So see you all tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.